everyone, today we will discuss about H-Index and i10-Index. H-Index is the concept of H-Index is given by Dr. George E. Hirsch in 2005, and this index is used for researchers' performance as measurement tool. If we want to see or check the performance of any scholar or researcher in his field, so you can use H-Index or i10-Index tool to see the performance of the researcher. And most of the researchers you have listened that they mention about their citations, number of citations. So these citations are used to check the performance of the researchers. So by definition, if we will see that H index is an author level metric that measures both the productivity and citation impact of the publications initially used for an individual scientist or scholar. In another word, we can say that it is simply a calculation which is based on number of papers a scholar has published and how often those publications have been cited. Here is very important one thing. For the calculation of H index, we should have a number of papers and how often those publications have been cited, means number of citations. At the point where number of papers and number of citations will be equal, that point we will consider as H index. हम इसको प्रैक्टिकली एक दो रिसर्चर्स का प्रोफाइल विजिट करके भी चेक करेंगे कि किस तरह से H इंडेक्स क्रिएट किया जाता है. And the i10th index indicates the number of academic publications an author has written that have been cited by at least 10 sources. This is the number. That's why we said i10th index. It was introduced in July 2011 by Google as part of their work on Google Scholar. So these are the definitions of H index and i10th index, and now we will see the profile of researchers through which we can understand H index and i10th index. All right, यहाँ पर हमारे पास एक रिसर्चर हैं. अगर आप उनका प्रोफाइल चेक करें, he has total number of citations 27, H index 2 and i10th index 1. H index 2 means कि इनके 2 पेपर्स हैं, 2 रिसर्च पेपर्स हैं जिनकी साइटेशंस 2 या 2 से ज़्यादा हैं. यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जैसे कि पेपर नंबर 3 अगर देखें तो उसकी साइटेशंस भी 2 हैं. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स और नंबर ऑफ साइटेशंस का इक्वल होना ज़रूरी है. तो यहाँ पर अगर हम थर्ड पेपर कंसीडर करते हैं तो थर्ड पेपर कंसीडर करेंगे, लेकिन इसकी साइटेशंस चूँकि 2 हैं तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स और नंबर ऑफ साइटेशंस इक्वल नहीं रहेंगी. सो H इंडेक्स 2 का मतलब यहाँ पर ये लिया जाएगा कि 2 रिसर्च पेपर्स हैं जिनकी साइटेशंस 2 या 2 से ज़्यादा हैं, और H इंडेक्स हमें ये बता रहा है जो कि 1 है कि इनका एक पेपर ऐसा है जिसकी साइटेशन 10 या 10 से ज़्यादा हैं. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पेपर है, ओनली 1 पेपर जिसकी साइटेशंस 10 या 10 से ज़्यादा हैं. दैट्स वाई जो H इंडेक्स है वो 1 है, और i10th इंडेक्स 1 है और H इंडेक्स 2 है. और 2 का मतलब है कि 2 रिसर्च पेपर्स हैव साइटेशंस 2 आर मोर देन 2. इसी तरह से हम एक और रिसर्चर का प्रोफाइल विजिट करते हैं.
जैसे कि वी हैव हियर प्रोफाइल ऑफ डॉक्टर अमजद अली। इनका प्रोफाइल अगर आप रिव्यू करें तो इनकी टोटल साइटेशंस जो हैं वो अबव 3000 हैं और इनका एच इंडेक्स 33 है। इट मींस कि इनके नंबर ऑफ 33 रिसर्च पेपर्स हैं जिनकी साइटेशंस 33 और अबव हैं। यानी यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स बाय विजिटिंग गूगल स्कॉलर कि जहाँ पर आप देखेंगे कि इनके 33 पेपर्स होंगे जिनकी साइटेशंस 33 या 33 से ज़्यादा होंगी। और अगर आप i10 इंडेक्स देखें तो दैट इज़ 42 और 42 मींस कि इनके पास 42 पेपर्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जिनकी साइटेशंस 10 और अबव हैं, 10 और अबव हैं। तो रिसर्चर्स के मुताबिक अगर किसी भी रिसर्चर की एच इंडेक्स अगर 20 और अबव है, 20 और अबव, यू कैन से दैट उस रिसर्चर की अपने फील्ड में एक अच्छी परफॉर्मेंस कंसीडर होगी। तो इस तरह से टुडे वी हैव लर्नड अबाउट एच इंडेक्स एंड i10 इंडेक्स. दिस इज सिंपली यूज्ड फॉर to see the performance of the researchers or scholars. Thank you.